फ्रेंड्स, आज हम इस फायर अलार्म को बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा फायर अलार्म बिल्कुल तैयार है। अब इसको टेस्ट करते हैं। इसे पावर देने के लिए 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर किचन में आग लग जाए तो ये ऑटोमेटिक साउंड करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।